you mentioned Chris Lynn, you've got someone like Ben Dunn. Hafiz has gone well. That team. So good start here. Really put visitors under pressure. Got that powerfully away just for a single. It's a good pitch. This is going to be tough work for the Zlmi. Now, I think the way you see that ball there, race down to third man, shows just how fast this ball's coming onto the bat. And you don't need to play those aggressive shots, just use the pace of the ball. Crowd has gone berserk tonight, rightfully so. Home team off 2 wins on the trot, a good chance to win a third. Winning team, you see the crowds coming in, and this is one of the bigger crowds that we've seen at QlndR Stadium. Came in quite early too, from about 5:30. We just sensed that there would be a full house here tonight when Ben Dunn finishing an unbeaten 99 at 40. I certainly got the city talking. Surprisingly, none of them have helmets on. Ben Dunn has been planting them, not just over the boundary either. 3 6 so far across the tournament. And they're being monsters. Last ball of the over, and he bangs the boundary. So a good start this for the home side. 12 from the first over, 12 without loss. नया pswR क्लासिक चॉकलेट सीधे साही खुशी का मजा। My ABN Business Internet Banking के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस, एम्प्लॉइज की सैलरी ट्रांसफर, बल्क पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस जब चाहे कर सकते हैं। एलाइड बैंक, आपके दिन में हमारा काम। चले अब मैच देखते हैं। नया ऑयल सॉफ्ट, यह कॉटन जैसा सॉफ्ट और कपड़े के मुकाबले जटिल हो जाए ताकि आप करें फ्री। अब नो प्रॉब्लम, सिर्फ ना दे। Chocolate chip loaded, more chocolate in every bite. Smooth and delicious chocolate cream plain, scent-filled chocolate chip cookies. Biscotti chocolate chip loaded. सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ खर्चे से। 2 wins in a row. Right, Alina. YouTube.com/pswRPK for live streaming. Official YouTube channel for the Pakistan Super League. Fantastic highlights and exclusive video content. cricketgateway.com for international viewers and crickwick.net and India sportstiger.com. So get the ball-by-ball action on cricketgift.com. So many ways to enjoy the PSL across the tournament. Such huge interest as well. Why wouldn't it be so much talent on show? March Madness. If you want some tickets, TCS outlets across Pakistan, 30% off students. Winning this week. And our official radio partner. 6.2. That's all wide. Wing a little bit as well. Slight little bit of movement every now and then. Not consistent. Presentation. Also left summer. Got that floating slip in place there. Want to bowl that sort of width for too long this evening. Too good. You around there, how much factor that will play towards the end of the Zlmi innings. Worked away nicely into the gap.
loss for a single. So we've been tracking the cool and cool spirit of cricket. Sultan's top of the standings in terms of the competition, but also top of the standings in terms of the spirit of cricket. It's how you relate to your teammates, the opposition, the match officials. We're watching everything. I've been all over it as well. The spirit's been good across this tournament. Played in the right frame of mind for all the players. Spot the right to him, Ali is. Just enough movement in the air every now and then to create enough doubt for the batsman to try and really target him and line him up. I just come back to that decision to open with Sohail Akhtar. He's opened in one game, just when Lin's gone out. Lin comes back in, he succeeded at the top. Finds himself opening again. It's all right if his strike rate's up. It is now. Can he continue? Last ball. What an over from Rayat Ali. Just 3 from it, 50 without loss. तेजी को जो दुनिया को बता दो तुम्हारी मीटिंग ये मीटिंग तो जरूरी है तो फिर चलिए चुनो वो संत जो है चुनी न दूसरों ने सफर रखना है जारी सदा से जीत हमारी पैंथर टायर पैंथर लगा फिक्र मिटा डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जॉब्स पे असर 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके कंधे से बोझ हटा दे हेड एंड शोल्डर्स Ripped in half. Well ball. It's gone away for 4. The edges fly here too. That's the challenge with bowling second. Hard to defend. First ball. File that under the challenges of bowling on a fast pitch. You bowl of absolute beauty, and before anyone can blink, it's gone to the boundary. Could have gone anywhere. Oh boy, now they can get a single. Watch out there, Neil, because probably 25 runs short in that inning. Should have got to about 200. Now they've got to watch out that they don't give away unnecessary runs. Skipper was leaning on his bat at the non-striker's end, and Zaman wanted to single, probably rightfully so. That ball was a mile from the stumps. Beat everybody. Fortunately, they had a third man in place. Not likely to luck of Riaz here. It's bowling fast. Those wickets, all-time wicket takers. Riaz way out in front. Ali as well lines himself up there. Zlmi's played all 5 seasons for them. Now this season as captain too. We'd love to see his team through to that last ball. This competition has really been turned on its head, hasn't it? Looking better by themselves at the bottom of the standings. This is a brutal game. Yeah, remember they won it last year. At the Ages. It's sorts of tournaments. Tend to be won by the side who's in form at the right time. And the Lahore QlndR's batsmen in form.
saw that this evening. Tactically, they were on. They just continue a couple more wins out of their last 3 games. They'll see themselves in the final. Who knows? Ball to go for service. That real first ball was back really nicely. Oh, good end to the over. 22 with that. My ABL बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस, एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रांसफर, बल्क पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस जब चाहे कर सकते हैं। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा काम। चले अब मैच देखते हैं। Giggly Opus, rich caramel से भरी fun-sized and fun-filled chocolate. Alvaro, London onto setting a royal combination. Nestle. With our loss. Oh, that is huge. 6 runs. First 6 of the innings, and it comes off the back of Fakhar Zaman. Another donation, 20,000 rupees. Goes in low. Stand and deliver. Right about these. Bowled a beautiful over first up. Changed ends. Fakhar Zaman having none of it. Lovely strike. Actually shows that Zaman has just opened up on that first delivery. He blows again, and this time it's even bigger into the crowd. Back-to-back sixes, and Lahore up to 34 with our class. Tournament sixes heading towards 300. That HBL 6 counter. Flying along. This one was even bigger. This is massive. Pace on the ball. The man who's opening himself up to play this sort of shot is exactly the ball you're looking for. One pieces. Highest score is 33 against Islamabad United. Is this the night for Fakhar Zaman? Already seen better. There's no Chris Lynn to come. He's just having a word with his bowler. Average run rate 10.2. Required run rate now 9.24. This is like why I really like Oman at the top of the order. We saw them try Salman Butt in one game. Oman was just getting 20s. Oh, I'm taking 20 on 10 every day of the week. Now he's 21 on 11. If you can get off to a start like that, you're taking the pressure off this middle order. And have a look at it. Chris Lynn, Hafiz and Dunn. Fantastic middle order. Perhaps I'd like to see Lynn at the top. I just question this evening whether that's the right idea. How we'll play.
got Lynn and Dunk sitting in the sheds. Hafiz out there. Hafiz can play this type of role where he can go and run a ball, explode a little bit at the end. But why is Chris Lynn such a feared batsman? Is he can blow apart a run chase so quickly. He can blow apart a power play. That's not what we're seeing now. I wonder if the skipper's just playing himself a little bit too high. Absolutely destructive. Talking about momentum in this competition. Lahore at one stage by a victory. Right now, love the momentum. Would hate to lose a game like this. And then head on to big games to come. Karachi, Sultans. This is the game for the taking. Yeah, right, but they've found ways to lose. The unlosable, haven't they? Traditionally. Fantastic, right so. Man of the match, face painting. There's so much colour in fans throughout this tournament. Take a picture. That's the reason why you come down to HBO PSL 5 action. There's so much here for the fans to enjoy, not just on field, off field too. This is quieted down, hasn't it? Just 4 singles from this over, the 5th over. 1 ball to go. So doesn't look comfortable out there. Just feel something's got to give. Who's it going to be? I think with the experience, I don't think it's going to be Wahid Riaz to crack. Pakistan just get through this over. He's been bowled well. Bowlers have every right to bowl a good over. Just don't lose your head. Well, just as you say, he almost lost his wicket. 5 overs, lost 39 without loss. उम्मीद से डबल मिला अच्छा लगा यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी कीमत में पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो नया ग्रीन सुपर क्लासिक चॉकलेट सीधी सादी खुशी का मजा बिल्कुल जबरदस्त स्टार्ट लाहौर कलंदर की जानिब से रन भी बने और विकेट भी नहीं गिरी है। छुपाता नहीं है वो शायद पहली विकेट है या नहीं है बहुत ही मुश्किल कैच और छोड़ दिया ब्रेथवेट और ब्रेथ कुछ आ रहा था कुछ जा रहा था जब गेंद हवा में था और करना चाहिए था इसलिए कि ये पूरे फील्डर नहीं है बिल्कुल और बड़े हाथ हैं इनके बड़े मुश्किल से गेंद निकलता है इनके हाथ से लेकिन काफ़ी हवा में चला गया था बॉल और आसान नहीं होता रात के टाइम इतना ऊंचा कैच करना थोड़ा सा दूर हो गया उनकी बॉडी से बॉल यही तो है मौके पे चूकना नहीं चाहिए और आसान कैच था इसलिए बॉल तक पहुंच गए थे ऐसे रन चेस में आपको किस्मत की भी जरूरत होती है इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल ज़ल्मी को यहाँ पे विकेट्स की जरूरत है अगर विकेट्स ना मिले तो रन रेट को इतना मुश्किल ये एक बार फिर कैच अच्छा स्टेबल कर लिया था इमरान खान अगर इनके कप्तान होते तो इनके 5 चक्कर लगवा देने थे उन्होंने मैच के फौरन बाद छोटी छोटी चीजें अगर ठीक नहीं होती हैं तो प्रेशर पड़ जाता है कैच छूट गया
इसके बाद अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, जिसको कहते हैं कि चले फिर से मिलेगी बारी, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कई दफा नहीं भी मिलती है। चले ज़ैनब अब्बास के पास चलते हैं। Right, so I'm here with Pepsi Capture करोड़ के winners, जहाँ पे दोनों मोहम्मद मौजूद है। मेरे साथ मोहम्मद अजहर है, साथ एक और मोहम्मद है। जी बताएं, पेप्सी कैचर करोड़ आप जो है आपका हिस्सा इसमें बना है, तो कैसा लगा कैच करके? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं घर से निकला था, मेरी वालदा की दुआ भी मेरे साथ थी कि बेटा जाएं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मेरी नीयत थी जब से PSL शुरू हुआ है कि कैश करेंगे इंशाल्लाह। गरीब लोग थे, अल्लाह ने मेरी सुनी, यहाँ पर आया हूँ और खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरा साथ दिया, मेरी वालदा का, मेरे पीरो मुर्शद की मेरे साथ दुआ थी, उन्होंने भी कहा आप जाएँ, मैं आपकी दुआ करता हूँ। मेरे पीरो मुर्शद, मेरे वालिद, मेरे दोस्तों ने सब ने कहा आप कैच जरूर करेंगे। अभी मैं ग्राउंड में बैठा हुआ था तो मेरे दोस्तों के फोन आ रहे थे, वालदा भी कह रही थी इंशाल्लाह कैच आएगी, और अचानक एकदम से कैच आई और मैंने उसको कैच एक हाथ से कैच किया है। जबरदस्त, आपकी वालदा की मेरे ख्याल है दुआएं जो है कबूल हो गई, क्योंकि आपने आके यहाँ पे जीत लिया। आप बताएं आपका काम बता दो। ये मेरा पीछे बाबूनगर से है, मैं बेसिकली लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ फिर तो आप लाहौर कलंदर लाहौर कलंदर को इस मूवमेंट में जब हाथ जाए तो मैं भी कोई नहीं I like your very love and Pakistan और पाकिस्तान किया पाकिस्तान जिंदाबाद और एंजॉय करें। आप मैं तो दावत की थी यार मैं तो मोहब्बत नहीं देता, मैं नहीं होना। और आप दानी दावत थी नहीं आया सफरा लेना आया हूं तू नहीं मेरे वल्ला आया तेरे नाल लेना है नहीं यार ओ मेरे कदम में ला या मेरे नु मेरा की याद है ABN बिजनेस इंटरनेट बैंकिंग के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस, एम्प्लॉयज की सैलरी ट्रांसफर, बल्क पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस जब चाहे कर सकते हैं। एलाई बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। चले अब मैच देखते हैं। नया ग्रीनफील्ड सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा। दांत लगते हैं तो नहीं, सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है ना। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक है। अब बचे सिर्फ खर्चे से, दांतों से नहीं। पहुंचते हैं और 6 ओवर्स खत्म हो गए, पावर प्ले काम पजीर हुआ। फखर को मैनेज करना अपने आप को इस अगले 5-6 ओवर्स के हिस्से में। बिल्कुल स्टार्ट मिलते रहते हैं उनको, लेकिन उसको कैपिटलाइज भी कर रहे हैं उनके ऊपर। और लाहौर कलंदर के साथ भी ये स्टोरी रही है पास में कि पावर प्ले बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही 6 ओवर के बाहर की क्रिकेट शुरू होती है वो थोड़ा लूज कर जाते हैं अपना मोमेंटम। यासिर शाह बॉल करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा स्पिन हुआ। 149 पे अभी कोई खिलाड़ी आउट नहीं। चले फिर से चलते हैं ज़ैनब अब्बास की तरफ। Right, so it's that time of the day when we have Inverex Solar Energy, हमारे heroes, and ये जो दो heroes हैं ये वाकई heroes हैं because they are basically playing mixed martial arts and they've won several medals. Both of them, by the way, are siblings. बहन भाई दोनों यहाँ पे हैं और दोनों ही जो है MMA खेलते हैं. Sorry, we'll have to go back because there's been a wicket. We'll come back to you guys just in a minute. So नया बहाना ढूंढा है इस दफा, मेरे ख्याल से कप्तान साहब की छुट्टी हो गई है। बहुत अच्छा खेल रहे थे मगर फुर्तीले उतने नहीं है जितना कि इनको होना चाहिए इस लेवल के ऊपर, क्योंकि फील्डिंग जनरली जो है वो ठीक ठाक होती है और उतनी फुर्ती नहीं दिखाई कि जितनी दिखानी चाहिए थी। और ये सांस आया होगा ब्रेथवेट को भी, क्योंकि इन्हीं का कैच ड्रॉप किया था। बड़ी अच्छी थ्रो, 1 बाउंस पे आई, अच्छी कलेक्शन और हिट टाइम बेजो को उड़ाया। अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेल भी सकते थे मगर पहली विकेट गिर गई कलंदर्स की। 50 पे कप्तान साहब आउट हो गए 21 पे, 19 बॉल खेले 50 पे। Wait, no need to
We'll never know. नया सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा। Chocolate chip loaded with more chocolate in every bite. Smooth and delicious chocolate cream. मैं और उनके कप्तान में दूसरे रन पे हुआ। पहले 13 रन लिया उन्होंने, उसके बाद फखर ने 2 कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद वापस चले गए। थोड़ा सा बॉल वॉचिंग की कप्तान साहब ने, बॉल की तरफ देख रहे थे, फखर की तरफ नजर नहीं रही उनकी। चले वापस चलते हैं ज़ैनब अब्बास की तरफ। यार मैं जब भी आती हूँ विकेट गिर जाती है, बट अनीता और ये मेरे साथ मौजूद हैं। तो फर्स्ट फीमेल मिक्स मार्शल आर्ट्स की ये यहाँ पे एथलीट है। व्हाट मेड यू टेक अप दिस पर्टिकुलर फील्ड? क्रिकेट में भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है और मैं PSL का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने दूसरे जो स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट्स की बात है। आपको देख देख के ये भी इंस्पायर होगी। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जब ये मुंजा से इस्लामाबाद आई तो आई वाज फाइटिंग और मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था। व्हेन शी रीच्ड इस्लामाबाद एंड शी केम स्ट्रेट टू द जिम एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड टू मी वाज, भाईजान मैंने आप जैसा बनना है। Well, both of you are in this field. I hope you don't have worried parents. No, alhamdulillah, we have very supportive parents and siblings as well. All right, Infinite Solar Energy का ये बैट है, आप दोनों साइन करें। We're extremely proud of you. I think this is a great initiative because we get a chance to see all these unsung heroes of Pakistan, and this duo here is just one example. Thank you so much. Thank you. दोनों से पंगा लेने का नहीं है भाई साहब। 52 पे 1। नया सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा। फ्रूट ऑयल्स, पाकिस्तान's favorite. डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जॉब्स पे असर। 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। जैस कैश मोबाइल अकाउंट के साथ घर बैठे मोबाइल लोड खरीदें और किसी भी नंबर पर जैस कैश ऐप डाउनलोड करें। पैसा नहीं, जैस कैश। सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है ना, सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ खर्चे से, दाहों से नहीं। बिना कट वाला शेप बनाना है, जेट ब्लू 3 चलाओ, जिसके 3 क्रोमियम ब्लेड से मिले स्मूथ शेप का मजा। जेट ब्लू 3 जो चले 10 शेप्स तक। और पिच भी अच्छा है। ब्रेक बॉल करने के लिए आए हैं और लपेटे की कोशिश। कई दफा अच्छा खेलते खेलते ऐसी बेतुकीसी शॉट खेल जाते हैं जिससे गुस्सा आता है। टाइम बाल दानेदार, चाय के मजे लेते हुए। ऐसे बाहर जो आते हैं क्रीज से, जब गेंद रोकते भी हैं तो ये नर्वसनेस ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी फर्म यस और नो कॉल होनी चाहिए। क्योंकि जो नॉन स्ट्राइकर है वो भी फिर आपको गेस वर्क में, आप गेस में ही पड़ जाता है कि आप सिंगल ले रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा ऑफ स्ट्राइक होना भी लाजमी होता है T20 क्रिकेट में। बहुत ज़्यादा अगर आप बाउंड्रीज देखते रहेंगे हर बॉल पे तो अपने ऊपर प्रेशर डालते जाएंगे। विड्थ नहीं देनी इनको। अच्छी शॉट खेली। मैं तो समझता हूँ इनको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। इतनी शॉट्स हैं इनके पास। बड़ी छक्का जब ही कहता रहा, तो छक्का जब लगाते हैं तो फिर अगर बैट्समैन के पास ये एबिलिटी है, जो कि डांस की एबिलिटी इन 3 हजरात के पास है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। करते क्या है ये? इनकी डांस स्किल बिल्कुल मेरी तरह ही है।
लग रहा है एक दूसरे को गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एनीवे सीरियस माहौल हो रहा है ज़ल्मी के डगआउट का, क्योंकि विकेट्स चाहिए। बाहर बैठ के आप विकेट प्लॉट नहीं कर सकते, मुश्किल काम है। वैसे इसका अलग टेम्परामेंट चाहिए, कोच होने का या बॉलिंग कोच होने का। बिल्कुल, जब क्रिकेट आप खेल रहे होते हैं तो आपके कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। जब आप कोचिंग में आ जाते हैं, डगआउट में बैठे होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं और फिर आप प्लेयर्स के दारोमदार पे होते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। वैसे मॉडर्न अगर डगआउट में मैं हूँ अजहर, तो मैं तो बिल्कुल ही गुम जाऊँ, इसलिए कि वहाँ पे एक बैटिंग, एक बॉलिंग कोच, एक फील्डिंग कोच, एक एनालिसिस वाला, एक फिटनेस गुरु, मतलब कप्तान, वाइस कप्तान। तो जब मैं अगर जल्दी से आउट होके जाऊं तो मुझे तो ये पांचों के पांचों अपनी तरफ पुकारेंगे कि आपके साथ ये 10 गलतियां थी, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। तो मैं तो बिल्कुल ही क्रैक हो जाता। धन्ना हौसला है आपका। बिल्कुल हौसला अब आजकल चाहिए। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है आपको, और जब आप परफॉर्म नहीं करते तो काफ़ी सारा कोचिंग स्टाफ बैठा होता है, काफ़ी चीज़ें ख़राब लगने लग जाती हैं अपनी। मैं यही कहता हूँ ना कि आपको कई दफ़ा छोटा सा कॉर्नर चाहिए होता है अपने लिए, जहाँ पे आप अपने आप से गुफ्तगू कर सकें, बात कर सकें, तसल्ली दे सकें, या एनालाइज अपनी इनिंग्स को या बॉलिंग को अपने हिसाब से कर सकें। डॉट बॉल आखिरी का 8 ओवर खत्म हुए, 55 पे 1। उम्मीद से डबल मिला, अच्छा लगा। यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी कीमत में। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। क्या ये दाल रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। चट्टानों पे हो भारी। लगाने लगे थे बड़ी शॉट और फिर रुक गए। अभी कंपैरिजन देख रहे थे, ज़ल्मी यहाँ से अपनी इनिंग को थोड़ा मोमेंटम दे रहे थे, लाहौर QlndR थोड़ा मोमेंटम तोड़ते नजर आ रहे हैं। डॉट बॉल्स बहुत हो रहे हैं, पिछले 2 ओवर में काफी गेंद डॉट हुए। तेज बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो नंबर 3 पे अब देखना है कि स्पिन के खिलाफ क्या हरबा अपनाते हैं। आसान नहीं होता, इसलिए कि आप जब ओपन इतनी साल करते रहते हैं तो आपका जो रिदम और टेम्परामेंट जो है ना, वो फौरन अंदर जाके और बॉलिंग को प्रकाश लगाने का होता है। 3 पे जो वेटिंग पीरियड है ना, वो कई दफ़ा आपको चैलेंज करता है, क्योंकि आप के करियर में बहुत कम ऐसा होता है जब आपको बैटिंग करने के लिए इंतजार करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। बहुत ही अच्छी शॉट खेले, बहुत ही लाजवाब शॉट, इसलिए कि जो फील्डर था बाउंड्री पे उसको बीट करना था, सीधी हिट लगाई और स्पिन के साथ जाते तो उस फील्डर को के पास गेंद जाती। सो बहुत ही आला प्लेसमेंट की है, बहुत ज़रूरी थी बाउंड्री, और काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो रहा था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया। रॉन्ग वन था ये, लेकिन उसको रीड करके सीधी हिट लगाई, शेप लूज नहीं की। कैमरे को बॉल लगा है, बिल भिजवा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल काफ़ी महंगे कैमरे होते हैं ये, और फ़खर जमान को बिल पे करना पड़ेगा। वो बाल बाल बच गए, लेंस बच गया, मगर जो ऊपर वाला पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पर्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी टेक्निकल टर्म है, उस पर गेंद लगा। फिर से कोशिश थी कि कैमरे को एक तरफ हिट मारे। थोड़ी सी जल्दी लगती है इनकी बैटिंग में, जब मिडिल ओवर्स में खेलते हैं। बाउंड्री लगा ली, धोखा मिल गया, अब आप 1 रन लें। क्रिस लिन को भी थोड़ी हिम्मत दें, वो भी कुछ करें। कैमरामैन जो है वो थम्स अप कर रहे हैं, इसलिए कि बाल बाल बच गए।
फील्ड मगर एक ही रन मिलेगी क्रिस्लिन को। स्ट्राइक उनके पास 123 रन चाहिए 66 बॉलों में 65 पे 1। बायोमेट्रिक एटीएम सर्विसेज ने तो सब आसान कर दिया। अब करें कार्ड एक्टिवेट किसी भी वक्त और दीगर सर्विसेज चले अब मैच देखते हैं। Giggly Opus, rich caramel से भरी fun sized and fun filled chocolate. Have you got your DigiCash card? Come to the nearest PSO station today or apply for Fuel Link mobile application. Panty, जिसमें है प्रो विटामिन फॉर्मूला जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिनों में। बालों को अपनी तरह उड़ने दो। Panty. Nestle Fruit Oils, Pakistan's favorite. मुझे सिर्फ डर तब लगता है कि जब ये डॉट बॉल बहुत खेलते हैं क्योंकि तब ये प्रेशर बिल्ड करते हैं और बार बार फिर विकेटें गिरती हैं। लो जी प्रेशर बिल्ड हो गया है अब बॉलर के ऊपर। बहुत ही आला शॉट इसलिए कि पार हिटिंग का जो पेस था वो शानदार था। यही देखने की बात है क्रिस्लिन की। बड़ी शॉट लगाते हैं सबसे अच्छी बड़ी शॉट खेलते हैं HPL PSL में डंक के बाद। बिल्कुल इस एरिया में बॉल जब भी गिरेगा ये ऐसी ही शॉट मारेंगे। बहुत अच्छा रेडी होते हैं इस लेंथ के लिए और थोड़ी सी पेस ऑफ करने की जरूरत है। जितना पेस इनको मिलता है उतना अच्छा शॉट लगाते हैं। नहीं तो बॉलर को ऑफ कर देंगे बिल्कुल। इस पेस पे लेग बॉल करना तो जुर्म है। फिर से लेग बॉल इस दफा नीचे खेले। देखने की और ये भी बात है कि इतने बड़े स्ट्राइकर हैं क्रिस्लिन मगर जल्दी नहीं करते अपने आप को ये भी टाइम देते हैं। तो ये फखर को भी सीखना है। इनके साथ बैटिंग करते हुए आपको कई चीजें अच्छी देखने को मिलती है। बहुत ही धमाकेदार शॉट है फ्लैट 6 और पार हिटिंग का पेस देखिए। बिल्कुल पांव अपनी जगह पे जमे हुए थे। फ्रंट और बैक लेग दोनों मजबूती के साथ गड़े हुए थे जमीन जिससे कि आपको एक सॉलिड बेस मिलता है और फिर आप ये बेसबॉल की तरह की हिट लगा सकते हैं। अब तो पार हिटिंग जो है वो आप गूगल कर सकते हैं। जो यंग बच्चे हैं उसमें आपको मिल सकते हैं जो ट्रेनर्स हैं या कोचेस। फखर भी उसी किस्म का शॉट लगाना चाहते थे लेकिन स्लोअर कटर मारा उन्होंने जो उनको उतना पेस नहीं मिला शॉट लगाने के लिए। ऑब्वियसली बॉल थोड़ा ऑफसाइड के ऊपर था। सही बात की आपने। जितना पेस अच्छा होगा आप नेट पे जाके हिटें मारते रहे जितनी मर्जी लेकिन अगर आपका पेस अच्छा नहीं होगा आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। आपको देखना है कि जो T20 के बेस्ट प्लेयर्स हैं कैसे पावर हिटिंग करते हैं क्यों उनके शॉट दूर जाते हैं। लड़ना नहीं है भाई और प्यार मोहब्बत से कैच कीजिए। ये देखिए एक और बहुत ही अच्छी एग्जांपल कि किस तरह से सॉलिड बेस के साथ इस दफा डिफरेंट डायरेक्शन में चौका लगा मगर गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन की तरफ गया। थोड़ा आगे किया था इस दफा बॉल लेकिन क्रिस्लिन जब हिट मारते हैं उनसे ज्यादा जोर से हिट फिर कोई नहीं मारता। बहुत ही जबरदस्त शॉट। इतना गैप नहीं है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से लेकिन दोनों के पास कोई टाइम नहीं इस गेंद को पकड़ने के लिए। गैप में खेले 1 रन 2 रन मिलेंगे और कुछ और करने की जरूरत है ज़ल्मी को इसलिए कि ग्रेगरी की पेस इतनी नहीं है। लेग बॉलिंग कर रहे हैं और वेरिएशन भी जो है वो बैट्समैन उसको भांप रहे हैं तो अलग कुछ करना है। बेहतरीन तो यही है या ये यॉर्कर करें या फिर ये स्पेस ऑफ करें बॉल को। यही बेहतरीन चांस है इनके पास। या बॉलिंग ही ना करें सबसे बेहतरीन चांस ये है। उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। और एक और बड़ी शॉट। बहुत ही आला ओवर खेले क्रिस्लिन और बताया उन्होंने कि किस वजह से इस HPL PSL की वो जान बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट्स 20 रन मिले इस ओवर में। सुपर प्लस चॉकलेट सीधी सादी खुशी का मजा।
New chocolate chip loaded with more chocolate in every bite. Smooth and delicious chocolate cream bhari, set to fill chocolate chip cookies. Biscotti chocolate chip loaded. दाग लगते हैं तो लगे। सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है ना। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ दागों से नहीं। 130 clicks. It traveled quickly. Big over for the QlndR's at last over. Gregory went for 20. Shows the quality of this pitch. Don't bowl that lead. Don't bowl that lead. That's the key tonight. You're a Zlmi bowler out there. I'm the captain. I think that the skipper's just going to be in your ear for the whole night. Don't bowl slow. Anything but that. Hassan Ali comes on the ball and he's there to provide them with a breather. Break this partnership. Rhythm 35 of 23. It's another house full here at Gaddafi Stadium, Lahore. You've been wonderful. Such a valuable contribution. Fans always. $85 for 1 after 10.1. Going at a great pace. What has been likable about this pair is that they've not really gone berserk. They've picked the right lanes, right balls, mostly, and hit them so cleanly. This is the type of pitch that Chris Zlmi has at home. Now this is like the Gabba, a fast, bouncy pitch, true. 4R ahead at this stage. Remember though that they've come home with the house on fire. Previous games with the bat, still got dunk to come, got fees to come. Are they fast catching up? QlndR's win this and move forward. They'd be what? Number 3 in the list, in the standings list, if they win today. White ball is played away quite nicely. There's a lot of craft involved on that occasion. Well, craft from the bowler. Not sure there was too much craft from Lynn. I think he was trying to hit it through those men on the offside, not over the top. Had no control over that whatsoever. Entertaining cricket. What is he thinking? He's applauding the effort from Hassan Ali. He huddled him, but the end result wasn't a great one. So 19 for 1. Galloping. Oh, that's even better. Bit of fun and giggle. Blocked his way, didn't want him to hit that one. Probably he couldn't have, because I think it's given a dead ball straight away these days, isn't it? That is simply magnificent. That's a slower ball that has gone backwards. Reverse swing at his best. Swinging it backwards. Oh, cut him in half. The off-cutter sticking into the surface. Can we get the speedo on this ball? He's tried to bowl a slower ball. Would have been a great delivery for Aleem Dar to face. He got the scare of his life. He didn't know what to do with it. The initial gesture was to widen, and then it was given a dead ball. Can we pick that as the moment of the game? Lovely running between the wickets. Zlmi at the receiving end. Nothing seems to be working. Only Dar's reaction was as though the ball was being bowled at him. He ducked the bouncer.
Mate, it was a good wake-up call for the umpire. Well, keep his eyes wide open that moment. There he is. Is he cold, is he? On the pads once again, worked away into the gap. 11 done, 93 for 1. अब्बू ने प्रमोशन छोड़ा ताकि हमें शहर और स्कूल ना बदलना पड़े। पापा ऑफिस से लेट आकर Tapal strategic timeout here, Gaddafi Stadium, Lahore. ABI डिजिटल बैंकिंग से बस पे साइट से लॉगिन किया, क्यूआर से पेमेंट, कभी भी, कहीं भी, सब आपके हाथ में। Allied Bank, आपके दिल में हमारा अकाउंट। चलिए अब मैच देखते हैं। Pokemon, let's load it. New chocolate chip loaded with more chocolate in every bite. Smooth and delicious chocolate cream bhari, center-filled chocolate chip cookies. Biscotti chocolate chip loaded. हो बिरयानी, burger या Chinese, खाने के बाद डब्बा green tea please. Available in 8 flavors. किलर जैज़ वीकली बैकअप प्लस ऑफर लगाओ और फ्री जैज़ टीवी पर लाइव क्रिकेट के मजे उड़ाओ। दुनिया को बताओ। हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया एरियल जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई, सिर्फ एक धुलाई में। चुनो वो संत जो है, चुनी न दूसरों ने, सफर रखना है जारी, सदा से जीत हमारी। पेंथर टायर, पेंथर लगा फिक्र मिटा। PSO Base 4G जिसका 3D Protect फीचर है, इंजन, क्लच और ट्रांसमिशन को एडवांस प्रोटेक्शन। PSO आगे बढ़ने की आदत। मचा दे धूम। उम्मीद से डबल मिला, अच्छा लगा। यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी की। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। नया डीप फ्रीज सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा। स्कूल को भी होता है जब I think Zlmi needed that break, that strategic break for them to really get going again. They've been a bit regarding what to do with this match. Ownership of 43. अब्बू ने प्रमोशन छोड़ा ताकि हमें शहर और स्कूल ना बदलना पड़े। पापा ऑफिस से लेट आकर रात में हमें मैच पढ़ाते हैं। आप अपने से पहले अपनों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम आपका जुबली इंश्योरेंस के एजुकेशन प्लान्स में आपके लिए है हर मुमकिन सहूलत, जरूरत के मुताबिक प्लान्स और इजी पॉलिसी मैनेजमेंट। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जॉन्स पे असर, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। Great stuff from this pass. And action about to begin here once again. So we present to you Fakhr and Lin, two great strikers. Well, I think viewers at home, strap yourself in. We're in for
a bumpy ride from here. Whatever happens, it's going to be fireworks starting very soon. I don't really like this habit from Fakhr where after hitting every ball he's out of the crease without calling. And so, I mean, it can be so difficult for the non-striker really to know whether he's looking for a single, whether he's gone for a run or not. Look at his stance here. Here he's setting up if you want to baseball this out the ground. He's got in mind every ball's now going to go to six. He's starting to think, this is my over. Here we go. Is that up in the air? Is it safe? Is it six? It is. Over the rope. May not have middled it, but the result was fantastic, exciting. 100 partnership, 50 partnership is raised. 100 on the board as well. We've got an eco-friendly truck. Well, it doesn't matter how you get them, but the intention, you cannot fault. Cross seamer. He's setting up as though he wants to baseball it out of the ground. That's probably not the ball you want to bowl. If I see a batsman setting up like this, I'm probably bowling full and wide, something out of his hitting zone. Anything but that length. Good striking. The pace is good in this partnership. 50 of 31. That is still over 10, by the way, so it's not that straightforward. They need a couple of blows here, a couple of wickets to make it a bit tough for QlndR. Once again, wrong length. 50 comes up for Fakhr, his first 50 of this year's HBL PSL. We had to wait for a very long time to see him run into good form, and well, he's provided us with a lot of fun. Good effort, 50 of 34. Side like him as well. They like what he brings, they like his role at the top of the order. He's been threatening to put on the score. Played some wonderful shots throughout the tournament, but never quite gone on. He's doing that tonight. Again, that ball in that hitting zone. The skipper needs to get to him and say, let's get away from that ball. Bowl something else. Be inventive. He's strong on his bottom and wrist, because everything is being moored away towards mid-wicket and square leg. 3 4s, 3 6s, strike rate of almost 135 balls. Innings, and he's not finished there. Last 30 balls, 53 runs put up. Oh, it's a smash. The ball runs quickly to the fielder there. Hassan Ali, nicely positioned. Still a big over. 13 from it, 106 for 1. इसीलिए मैं घर पैसे सिर्फ एलाइड एक्सप्रेस सर्विस से भेजता हूँ और एलाइड एक्सप्रेस +1 टर्म डिपॉजिट से बेहतरीन मुनाफा भी। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। चलें, अब मैच देखते हैं। कपाल गाने का बेहतरीन गाना खुशबू और साहिबा। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। दाग लगते हैं तो लगे। सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ खर्चे से, दागों से नहीं। नया डीप फ्रीज सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा। Captain is running in to overs number 11. Still has a bit of gas. Wow. Certainly does. He's got some experience. Just a reminder that the
QlndRs are averaging 55 in the last 5 overs of their batting innings. They're well on target to get below that. Will we see Ben Duncan next? You always worry when you're looking, we assume he's going to be in next, but you always worry when the next man ends wearing the sweater. So my take on Ben Dunk is that he'll never have a double chin because he chews a lot of bubble gum. It's target reduction though, Ramiz, that never works. With and gone. Once again, Fakhar has been fed with some easy stuff. What he is doing is just opening the front leg and looking to be or back on the back foot and hit it across towards the leg side or cut it. Yeah, you're spot on, Ramiz. Once again, if you imagine a person set in that stance, where do you want it as a batsman? You want it in that hitting zone, exactly where he's bowled there. He wanted the strike, Fakhar. I think he got away with it, Wahab, because that ball was dead set once again in his radar. He would hit for a 4 or maybe for a 6 as well, so he's just got to tidy up a bit there, Wahab. He's got pace. Question to you is, why isn't he not trying that bowler length, the Yorker length? He easily go at 145. Yeah, like that. But as a fast bowler, there are days when you know you're going to nail it, and there are some days when you just off. This ball here, look at the way that's gone away from him. Just like that. J. Dot super over. Maybe not with the kicked arm. That's probably not allowed. That was a great use run. Hold it. 38 degrees. It's a shocking deuce run. Yeah. Spun the wrong way to be a deuce run. You know, if you're a fast bowler, there are just some nights when you know that you're not going to hit that length. And on a true pitch like this against someone like a Lynn, if you miss it, it's 6 runs. Best case scenario, it's 4. So that's why it's such a risky ball to deliver, but he's nailed that on that second attempt there. Can he do it again? Well, he wanted to play that mid-off fielder, go straight to that fielder, only a single, and after 13, 114 4. सीधी सादी खुशी का मजाक। देसी वो जो ऊखला माने दुनिया को बता दो हमेशा जीत पाए मिसाल अपनी बनाए सफर रखना है जारी सदा से जीत हमारी पैंथर टायर पैंथर लगाओ फिक्र मिटाओ सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक लेना। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचत सिर्फ खर्चे से, दाहों से नहीं। Look at who you're running against. I never saw Usain Bolt do that, apart from the last couple of metres of his 100 metres at the Olympics. I wanted to feel it, but it was so hard, just couldn't do anything about it. Well past her bedtime. He's happening around her. Away. This will be interesting how Lynn will play leg spin.
Is he any good against leg spin or spin? Is pretty decent. We got the answer straight away. Sorry, mate, for asking it. Well, another one to the HPL 6 counter. 295 now. Well, I think that shows if you drag it down against Chris Lynn, you're going to go the distance whether you're a spinner or not. Lahore fans in full flow, backing QlndR's. This is Chris Lynn's highest score in HPL PSL. This time goes a little wide and still gets worked for form. Massive shot, really was well timed. Hitting a cover drive to a wide ball is pretty special. I think the challenge now this evening is the ball's not really turning. So regardless of what he's like against spin, he can almost play this as a medium pacer. The ball's not necessarily turning. Just been told that his strike rate against spin is much better than pace in PSL levels. So that's the shot is proved me wrong. Lynn is great against spin statistics have proved me wrong. Pretty embarrassed. Scunges this one down to mid-on. Challenge here is here's why bowlers so far. They need to get an extra over. Does Yassi Shoal bowl another one after this? And has to have a spinner coming on and to bowl the 16th over, but that looks like they might need to do it. Fakhar Zaman's record against pace is a lot better than his record against spin. That is strike rate. Pace 141, spin 71 is the strike rate. Doesn't get into the meat of the bat, it's still a single. 10.17 is the required. My ABI digital banking से बस Face ID से लॉगिन किया, you are सब आपके हाथ में। आपके दिल में हमारा काम। चलिए हम मैच देखते हैं। हो जाए मुकाबला। रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया एरियल जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। सुपर क्लासिक चॉकलेट सीधी सादी खुशी का मजा Who to go to, right? We'll take a little breather here. Let's go downstairs to Zenova Bus. Thanks guys, commentary box और शाहीन यहाँ पे मेरे साथ हैं और टूटे हुए अंगूठे के साथ खेल रहे हैं। तो शाहीन पहले तो बड़ा मुश्किल होगा बॉलिंग कराना, आपका अंगूठा दिखा भी दें सबको, तो कैसे खेल रहे हैं इनके साथ? बिल्कुल टीम को ज़रूरत थी क्योंकि हारिस भी इंजर्ड था और उस्मान की वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। बस मैं यही था कि मैं खेलूँ टीम के लिए क्योंकि ज़रूरी है कि मैं मैच खेलूँ और परफॉर्मेंस करूँ। अभी तक आपका टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गया है, 11 विकेट्स आपने ले ली है। तो देखते हैं कि हम डेथ में आप यॉर्कर का इस्तेमाल अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब काम करते हैं इस डिलीवरी पे। बिल्कुल मेरी आखिर में यही सोचते हैं कि मैं अच्छा पहले ये बताएं कि QlndR's की तरह नहीं खेल रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो कोशिश करेंगे कि ये मैच भी जीते हम। अभी के मैच के बारे में क्या कहेंगे, सिचुएशन क्या लगता है कि अभी 9 विकेट्स तो हैं, स्कोर के बारे में क्या कहेंगे, हो जाएगा? पीछे भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, हफीज भाई है, डंक है, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि चले गुड लक विद दिस वन। है किधर अक्सर भाई किधर है? मारना क्या करना? Well, he said his son's going well. अगर नहीं खुलेगा तो He's enjoying the PSL. बहुत टाइट है सऊदी नहीं, अगर
So they're in a good position for this game. मैं आके देता हूँ आके देता हूँ अभी आप The placement is outstanding, glorious placement. Ball too easy for Preslin. 149 now, just 26. Hassan Ali has gone nowhere with his various states because he's been up and down, too irregular. Don't mind what he's trying to do, get out of the hitting zone. But look at the way Chris Lynn there steps across to off. That ball wasn't far enough away from him. It just shows what a challenge it is, bowling on such a true surface like this. How to go with my translation? That's his 50. Wonderful innings. Relief for QlndR's, relief for Chris Lynn because they need Chris Lynn to be firing away as the playoff situation dawns upon us. Really has been a great innings. 50 of 27, what a way to get back into form. 4 fours and 3 sixes. This partnership has really driven the knife into the Zlmi. It's hard to see how they're going to get out of this one. So much big hitting as well. High full toss. He wanted more out of that shot, out of that length. I think he also wants the umpire's arm to go out as well. Straight away, whether it's a no ball or not. Within touching distance now, QlndR's 54. 31 with routed that shot out of that length. I think he also wants the umpire's arm to go out as well. Straight away, whether it's a no ball or not. Within touching distance now, QlndR's 54, 31 with 9 wickets now. Surely would have won this. Expecting unexpected. PSO Base 14 जिसका 3D project feature आगे बढ़ने की हमें से बढ़ते जाए ये रास्ता खुद बनाए फलक मंजिल हमारी बेहतर टायर बेहतर लगा फिक्र मिटाओ The run rate has been the best for the QlndR. It's been the best for the QlndRs in the last 5, 11.56. Needing 53 from the last 30 balls. 135 for 1. It's Chris Lynn and Fakhar Zaman currently at it, and they're doing it in some style. Who needs Ben Dunn for when Chris Lynn is striking the way he does? Absolutely savage from Chris Lynn. We're going to have a look upstairs as to whether or not it hit the cushion on the half volley or on the full. Half volley it is. Lowly before, but man, he's hit that hard. No disrespect to Ben Dunn, but Lahore certainly showing they're not just a one-man team tonight. Fakhar Zaman's got his highest score of the HBL PSL 5. He's on 61 of 43, and this partnership is propelling Lahore to their 3rd win in a row, 89 from 53. Lynn has come out firing. Crunch that away. 4 runs, back-to-back 4s for Lahore. And Carlos Brathwaite under pressure. Reminds me of watching the likes of Gordon Greenidge and Robin Smith on the cut shot when I was a kid. You just feel sorry for the man at backward point, hoping that none of them get in the way. It's just vicious.
slashed back with a point. No chance whatsoever for the builders. No chance for the ball boy. It was another 70 metres behind them. Incredible upper body strength from Chris Lynn. Strike rate at the moment 193.3. What can Wahab Riaz say now with Lynn in this kind of mood? I don't know about you, Cass, but whatever he said, Carlos Brathwaite doesn't look that impressed. It's like, all right, buddy, you come and bowl it. Well, the last 30 balls have yielded 57 runs without any wickets, and that's been the challenge for Zlmi tonight. They just haven't been able to strike. They took just one wicket since Chris Lynn has come in the crease. They've just been scoring it well, haven't they? Well, the move to drop Chris Lynn down to number 3 has indeed been a genius one. Took his time to get in. The strike rate well below 60. And then in 1 over, the whole thing kick-started and he hasn't looked back. Lewis Gregory was the man who was beaten on that occasion, and now everybody's getting beaten. Scored 106 in the last 10 overs, which will win the last 5. Just how well Lahore did to pull it back. They picked up 4 wickets in those last 5 overs with the addition of just 48 runs. Just so well set by the home team. Haven't beaten Zlmi since 2016, so talk about a turnaround in campaign. Yeah, well, that run had to come to an end, didn't it? 7 on the bounce at Zlmi had beaten Calendars. But you just feel, you've sensed it here, the home games for the Calendars, that the momentum shift and the way that they're playing, the belief that they suddenly have, means that they're a real nasty proposition to come up against when they're in this mood. That's why. Fortunate time to re-bowl that delivery. 43 look high, 27 deliveries. It looks an easy ask if you have 9 wickets in the bank. Strange game this, 1 or 2 overs without boundaries. The momentum is with the home side, and the partnership is 95 for 56. That's a good stop on the boundary, just a single. Yeah, good work from Yasser Shah. It does bring Chris Lynn back on strike for the final 2 deliveries of this Brathwaite over. It's been a stunning chase, it really has. Just timed to perfection. They're not there yet. Still work to be done. At least the required run rate is under 10. A few overs ago. It's absolutely manic. It's a fantastic at Lahore, and the crowd cannot wait. Couple more overs. Will the home team do it? It's high in the air. There's a fielder running towards it under the lights. What a catch! Yasser Shah is pulled off a stunner, hasn't he? Well, that's brilliant. He kept them down to 1. He made sure that Chris Lynn was on strike that delivery with a brilliant diving stop down and long off. And then the very next delivery, he sprints in off the boundary, gets himself just inside the 30-yard circle. And I reckon we might have even got a dive for the cameras there as well. This went miles up in the air, but just watch Yasser Shah on the bottom of your screen, sprinting in. Oh, he dives, he just makes it inside the 30-yard circle. Magnificent. Pulls off the jaunty dive. Have a look, look. Wow. Well done, Yasser Shah. Big wicket at a crucial time of the innings. सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ खर्चे से, दाहों से नहीं। तेजी को जो ऊकला माने दुनिया को बता दो। हमें से बढ़ते जाए, ये रास्ता खुद बनाए, अलग मंजिल हमारी। पैंथर टायर, पैंथर लगा, फिक्र मिटा। Cookie ball, let's load it. New chocolate chip loaded with more chocolate in every bite. Smooth and delicious chocolate cream bhari, center-filled chocolate chip cookies. Visconi chocolate chip loaded. PSO Raise 4G जिसका 3D
प्रोटेक्ट फीचर दे इंजन क्लच और ट्रांसमिशन को एडवांस प्रोटेक्शन पीएसएल आगे बढ़ने की नया एरियल जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में नया ग्रीन सुपर क्लासिक चॉकलेट सीधी सादी खुशी का मजा Just lost his shape, back twisting in his hands as he makes contact. And he knew the moment it came off the blade that he was in trouble. Didn't reckon on Yasser Shah with the acrobatics out there running in from mid-off. See Lin's head goes down as soon as he makes the strike. From the over, 148 for 2. नया ग्रीन सुपर क्लासिक चॉकलेट सीधी सादी खुशी का मजा अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फिर भी मेरे लिए ले आए वो मुल्क से बाहर है और हम उसके बनाए घर में आप अपने से पहले अपनों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम आपका जुबली इंश्योरेंस के सभी प्लान्स में आपके लिए है हर मुमकिन सहूलत, बेहतर फंड्स, मल्टीपल प्लान्स और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल। जिसमें है प्रो विटामिन फॉर्मूला जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिनों में। बालों को अपनी तरह उड़ने दो। पैंटी Pakistan's favorite. Even Stevens after 16 overs. Zlmi had lost 2 more wickets. They were 148 for 4 at this stage, and there were 2 new batters in the crease, and they really struggled to gain momentum. Mahir Zaman is key here, 63 for 45. Ben Dunk to face the delivery. Pause there. Fielder an extra cover and mid-off was still in mid-chat as Wahab was halfway through his run-up. Out. Back-to-back wickets, and this is exactly what Zlmi needed, and they've got both the set batters out. Yeah, I said it wasn't over. There was still work to do, still runs to be scored. And Zlmi now have 2 men on naught at the crease, the perfect scenario for them. Wahab decided to go hard into a length, just outside off stump. It's a swipe from Bakar. And guess what? It's Yasser Shah in the right place at the right time once again. Wait, no need of flash. Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. 5 natural oil से बना नया Sunsilk Black Shine. ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें shine 24 hours. तो अब मेरे बालों का shine flow will never go. नया ग्रीन सुपर क्लासिक चॉकलेट सीधी सादी खुशी का मजा चाय के चाहने वालों के अंदाज कई और जो समझे हर एक निराले अंदाज को वो है टपाल हमारी नेशनैलिटी। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जॉइंट्स पे असर 100% तक डैंड्रफ घटाए और लौटने से रोके कंधे से बोझ हटा दे हेड एंड शोल्डर्स। I reckon I might have gone Samet over her fees, Professor. But we shall see. Ben Dunk to face his first ball. Well, he'll take that. That brings up the 150. And with the equation now, 36 from 22. You occasionally get this as a batsman.
occasionally, particularly in my case, where everything you do turns to gold. Miscues, miss the fielders, fly for four, fielders drop you, and you just turn the score over without even trying. Ben Duck, as a swipe, goes over the keeper's head for four. Well, Hungary has dismissed Ben Dunn 2 times with just 3 balls in PSL. There's lots of talk about the bubble gum, and Ben Dunn says don't read too much into it. It just keeps me calm and it keeps me focused. I know it's not the best habit, but it works for me. He's going to get an endorsement after this PSL. There's a bubble challenge on at the moment. I think we're going to have to try it. Perhaps Slats is going to do an Insta story. Never mind which bubblegum, I want to know which hairdresser that dude goes to. We've done 23 sixes in entry on PSL 5 so far. I want to see his team across the line, and that's what he said. I may have missed out on 100, but I got my team across the line. Yeah, 22 of those came in 2 innings. Gladiators and the Kings felt the might of his blade. That's a really, really good effort. Also a good effort from Wahab. This is a quiet over. 2 balls left. Can he get out of it without destruction from Duncan? Celebrations. It's all going really well for the home team, and then both the set batters out in the space of 2 runs. Oh. See what I mean? He's in that mode as a batsman where everything is going your way. Easy stop in the covers, misfielded. So very crucial. Here's Gregory. Okay, I'm sure he's fully recovered from the bike he picked up. 1 ball to go in the 17th over. They finished with the boundary. Suddenly, it's starting to get tight, isn't it? It's heading towards 11 to the over required. 33 now from 19. Well, superb from Wahab, using all his experience, not inconsiderable skill. 17 gone, 156 for 3. इनसे डबल मिला अच्छा लगा वीकली इंटरनेट बस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम पाकिस्तान जिसमें सब कुछ तुम ही हो दाग लगते हैं तो लगे। सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। बचे सिर्फ खर्चे से, दागों से नहीं। Giggly Bee Opus, rich caramel से भरी, fun-sized and fun-filled chocolate. Oh, scored 50 for 2 in the last 30 balls. Is there another twist in the tail here? Wickets will be telling. 32 required from 18 deliveries. Carlos Brathwaite. Boy, this could be the over where the game could be decided. Could well be. He's trusted with bowling death overs for franchises in the CPL. West Indies also. Question is, who closes it out? Body language from Ben Dunn.
managed to get a dive in yesterday and snuck himself over the line. Professor throwing himself around like a 21-year-old. Still think I would have sent Sammy. Sailing over that boundary. 5 balls since the last boundary. It's in the air and it will be caught. So it's wickets at the moment that's dominating the action here at the Gaddafi Stadium, and Carlos Brathwaite gets involved. Yeah, back of the leg to Hafiz. Wasn't going to give anything on the drive in the back. Steep bounce is excellent from Brathwaite. And Gregory makes no mistake. Backward point. He's a run of all 4. And again, I repeat, I'm not sure he was the man for that situation. Or have lost their 4th. It's the Prof. 158 for 4 now. लगते हैं तो लगे। सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है ना। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ खर्चे से, दाहों से नहीं। स्कूल होते ही होता है जर्म्स का अटैक, इसलिए मैं यूज करती हूँ स्लीप जो बाकी सब साबुन के मुकाबले में दी नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन। घंटों अब स्कूल में भी बचपन नॉन स्टॉप। Nestle Fruta Varieties, Pakistan's favorite. चाय के चाहने वालों के अंदाज कई, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल, हमारी नेशनैलिटी। नया डीप फ्रीज सुपर क्लासिक चॉकलेट, सीधी सादी खुशी का मजा। Hit a long ball. He's required at the moment to do exactly that. The required run rate has shot up over 11. Well, Brathwaite has figured out the sort of length and line he wants to bowl here. He's taking an absolute age to get the field set right to Ben Dunn. It's a sort of wide third man, the man on the line of almost like a 4th slip on the offside, inside the circle. It's a man at deep extra cover, long on, straight mid-wicket, and then the 2 men behind square are inside the circle on the leg side. Yeah, he bowled to that field. There's 3 men in a very wide arc, from a wide third man to extra cover to mid-off, so the wide half volley was the right choice. The end of the fees again, it's back of the leg ball, bounces up over hip height. Fees is looking leg side perhaps, but never in a position to hit it. Gregory does the rest. Okay. Trick at the moment. It's just getting tighter and tighter. The required run rate has touched 12. Big fancy. To bowl the 19. Rahat has got 1 left. Yes, here has bowled 3. I don't think we'll see him again. Gregory bowled 2. Gone round the park. Rahat's got to go with the left arm. Will this be caught? Yes, it will. Oh, almost fumbled. Tom Batsman and Brathwaite with 2 wickets in the over.
That's just brilliant execution. Brilliant execution. Mohamed Akram and Darren Sammy embraced down there in the dugout for Zlmi. But Brathwaite had the field set perfectly. Two men back within 30 yards of each other, long off and deep extra cover. He bowled exactly the right ball. And finally, somebody has burst Ben Dunk's bubble. Whoops, almost. Filtered. Tom Banchin sticks the tag out. Can't blow bubbles right now. Ben Dunk, he's disappointed. Out for 7, 160 for 5. Wait, no need of flash. Sunset Black Shine, हम करें shine 24/7. 5 natural oil से बना नया Sunset Black Shine. ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करे shine 24 hours. तो अब मेरे बालों को shine करो, will never go. वो चाबी वो बंद हो गया था क्या चाबी गाड़ी बंद हो गया बैठ कर चौथी मेरे से झगड़ा करने लगा बैठो मैं अभी उससे जा रहा हूँ पैसा लेने वो भाग गया गुस्सा में बैठो चाय पियो छोड़ो पैसा अरे पैसा छोड़ो अख्तर भाई बैठो चाय पिलाएगा खाना खिलाएगा बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई ओके भैया Exactly what the home team needed. Carlos Brathwaite hands on head, but he's done well. 2 wickets from the over. It's 164 for 5. नहीं बोला चाहता तो दूसरे को पूछो Pakistan's favorite. नया और पहले से बेहतर डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ फेक द बारेगा लाइक तो नहीं मिडल नो बाला उन्होंने फिर मैं चिड़ी नहीं गए उधर सीरिया तो दे हरी तो सीरिया बुका लगा बीच में काम नहीं ना वो दे हवा के हम सफर गिर जाने का दो गया तो बॉल पकड़ा था सफर रखना है जारी सदा से जीत हमारी पैंथर टायर पैंथर लगा विक्रम मिटा नहीं यार वो ओके पत्ते रेडी चल रहा है दूसरे वाला रेडी भी बढ़ रही है Raf Ali with the 19th over. A push for 2. They have to. The 2 right batters at the crease, but they're both brand new, and they're going to have to tee off from the word go. Yeah, 2 ball needed. The tension here is becoming unbearable. The home fans. 3 overs ago, thought it was going to be a cruise, another easy run chase led by Chris Lynn. रकम अक्षर हुंदा How quickly things have changed. This Zlmi side do not lie down. There's a reason no one's chased 180 plus against them before. तेरा काम बनया नहीं काम तेरा बनया नहीं रकम अक्षर तो बनया Smithfield, oh, they go for 2. They do. Good running. यार सर्दी Be में right at the top of your game in these final ये overs. सर्दी में से होती है 2 ball needed, another 2 picked up. नहीं वो बहुत बड़ी Smash square. It just burst through Yasir Shah. To be fair, if he hadn't got something on it, it would have been 4. मारे को छका You can feel the tension around the Gaddafi Stadium. मेरा 4 ही ओवर से पहुंच गया है Full house. Their team have been winning. Won the last 2 games emphatically by 8 wickets. अच्छा ले एक बॉल Oh wow! David Bissett goes big and it's into the crowd for 6. This is his game, David Bissett. He knows how to finish in style. And can he take his team across the line? 296 HPL 6s. And this is an absolute monster. From cricket's answer to David Grohl. He's absolutely killed this. Got himself deep in the crease and got the perfect delivery. The perfect delivery. A little short off cutter.
and then he kissed it goodbye into the night sky. Magnificent. Last year, he crashed 5 sixes in a chase of over 200 against Multan Sultan, so he knows how to do this. David Visser, is this your night? Well, that's all right. They've got it down to something that's very manageable now. 13 from 8. The dugout is intense, the crowds are intense. This is such a good game for HBL PSL 5. You want these nail biters. The fans in yellow dancing in the aisles. 3 deliveries ago, now they can barely look. Even Darren Sammy, that was a slightly sheepish smile, the first one we've seen tonight. A few balls to go, it was looking good. 11 from the server, 2 balls to go. Samit Patel gets it into the gap for 4. What an over this is turning out to be for the home team. 15 from the over with 1 ball to go. This, in a situation like this, in an atmosphere like this is an absolutely wonderful stroke from Samit Patel. He gives himself a little bit of room, tiny shimmy to the leg side, and somehow has managed to get the bat speed onto that slower delivery through extra cover. It's just a little punch, hardly any backlift, splits the field. Where will he go, Cap? Good ball, but they'll pinch a single. Excellent over. 16 from it, 1 over to go, and Lahore need 8 of the final over for victory. उम्मीद से डबल मिला, अच्छा लगा। यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी कीमत में। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जॉन्स पे असर। 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। हमें से बढ़ते जाए, ये रास्ता खुद बनाए, फलक मंजिल हमारी। पेंथर टायर, पेंथर लगा, फिक्र मिटा। Excellent from Brathwaite. 3 for 21. It's been a huge intervention from the big Barbadian. 5 balls to try and close this one out. We're in super over territory. Only been 2 super overs in PSL history, and guess what? Lahore have been involved in both. 1-1, lost 1. Just tension everywhere. Power that. Pitch single. So gets David on strike. 7 required from 4 deliveries. What a match this has turned out to be. Now we're going to have a little look. Wahab and Brathwaite are together. Brathwaite has been meticulous about this field. And Wahab will pretty much go with his bowler here, I reckon. Brathwaite is directing traffic. The crowd can barely watch. Not only is he worrying about which position they're in, he's trying to get his best fielders in where he thinks the hot spots are going to be. Fielders in yellow running everywhere. Bananas belting it all around the field. Might take a while, folks.
delivery. David Visa is going to clear that boundary. He's a fantastic fan gear here tonight. What a spectacle it's been. So happy to have PSL back in Pakistan where it belongs. The fans have come out in their thousands to support their heroes from home and away. By and large, they've been treated to some incredible cricket, some absolutely magnificent stuff from the players on show. So we've got the two behind square on the offside, man back at deep backward square leg, another one at deep mid wicket, another one at long on, another one at long off. That's a single and good delivery. This is a really good over from Carlos Brathwaite. A dot ball. Two singles, 6 off, swing bush, call it. Where's it going? Well, and it's one ball, isn't it? One ball and you win the game. Oh, shakab. And such is the power and skill of the modern batsman. You wouldn't bet against one of them doing it. Carlos Brathwaite again has got to outthink Samit Patel. Stuck with pretty much the same field as he had for David Visa. Yeah, exactly the same. Is he going to go for the same delivery? Leg stump Yorker. Oh! And a miss. What a bluff. That's an incredible bluff from Carlos Brathwaite. Slower ball into the pitch, wide off stump. Samit Patel was setting himself for something full and in at leg stump. Oh mate, what an over this is. He's just one step ahead every ball, but he still has David Visa in range. One stroke. 5 required from 2. Is there a super over on the cards? No need! Visa ends with a 6 and Lahore beaten the Zlmi for the first time since 2016 in HBL PSL. A 5-wicket victory and the fans are up on their feet. Have a listen to Gaddafi Stadium. They are going absolutely berserk here. Commiserations for Carlos Brathwaite, who kept his side in it. He kept them in it, he kept pegging them back. But in the end, he didn't have the answer, didn't have the magic deliveries to stop David Visa from clearing the rope. What a finish, what a contest. Finally somebody's chased over 180 against the Zlmi. And Wahab Riaz will be disappointed. दाग लगते हैं तो लगे। सर्फ एक्सेल का 15 वाला पैक है ना। सर्फ एक्सेल का नया 15 रुपए वाला पैक। अब बचे सिर्फ खर्चे से, दागों से नहीं। हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा नया एरियल जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में नींद से डबल मिला अच्छा लगा यूफोन वीकली इंटरनेट प्लस से अब मिले डबल इंटरनेट वॉल्यूम उसी कीमत में पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो 187 proves again not to be enough for the batting team, batting first. QlndRs have chased it down once more. Different match, different opposition, different heroes, but same result. You can see how much it means to this team. They're finally managing to click. Mr. Cool, Darren Sammy, you saw his emotions change so often in those last few overs. But a partnership of 29 of 12 deliveries between Samit Patel and David Visa has got Lahore singing and dancing in the stands tonight. Yeah, Lynn set it all up, 59 from 32 for him. He's moved down to number 3, proving to be a good one. David Visa, the second he felt contact, he knew those big arms, that big bat. He knew it was off the middle or close enough, and there isn't a ground big enough when he tags it.
Hard luck, Carlos Brathwaite. But what a moment for David Lisa and Samir Patel. Heroes for Lahore tonight. Let's head down now to Zainab Abbas. Well, I wouldn't say tonight's the match-winning one for me. I think this led the Pakistan played beautifully. They set it up for us again. So a lot of credit must go to them. We just finished off their job. Okay, thank you so much for the time and go well and show. Thank you very much. Appreciate it. Yeah,